नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा विषय रखूँगा जो हम लोगों के लिए बहुत अति आवश्यक है। आज का जो विषय होगा वो विषय होगा इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट। एक जानकारी आप लोगों को और दे दें कि चूँकि हिंदी दिवस चल रहा है तो मैं कोशिश करूँगा अपनी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स ऑन आवर इन्वेस्टमेंट और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग। देखिए आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग जो हैं वो आप जब भी इन्वेस्ट करें तो स्मॉल अमाउंट से आप इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट जब आप करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद मैच्योरिटी पे क्या होगा, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट होगा वो आपको रिटर्न में मिल जाएगा। तो डिफरेंट स्टेजेस आप जो इन्वेस्टिंग हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये स्लाइड है कि आप जब भी शुरुआत करें छोटे अमाउंट से, फिर धीरे धीरे ये ग्रोइंग स्टेज पे पहुंचते हुए मैच्योरिटी स्टेज पे, और मैच्योरिटी पे पहुंचने के बाद में फिर उसमें ग्रो नहीं होनी है, फिर वो एक पीक पीरियड पे पहुंचने के बाद वो नीचे की तरफ आएगा। तो इन्वेस्टमेंट जब भी करें तो स्मॉल अमाउंट से, एक कहावत भी हम लोगों में है, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए करें। क्यों लॉन्ग टर्म के लिए? कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट अमाउंट जमा करते हैं और हाई रिटर्न के बारे में सोचते हैं तो आप ये समझिए कि आपका इन्वेस्टमेंट डूबना मस्ट निश्चित है। उस इन्वेस्टमेंट को कोई बचा नहीं सकता। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, और इन जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें। और डिफरेंट स्टेजेस जो मैं इसमें बताऊंगा, सबसे पहली स्टेज होती है आपकी इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में एक्रूवल आएगा। एक्रूवल का मतलब आपका डिविडेंड या इंटरेस्ट एक्रू होगा, और मैच्योरिटी के समय रिडेम्पशन कर दिया जाएगा। रिडेम्पशन का मतलब यू विल गेट योर मनी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट वन इन्वेस्टमेंट, सेकेंड वन एक्रूवल, थर्ड वन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मीन्स पे बैक। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो दिया गया, इसी के बाद अंडरस्टैंडिंग टैक्स इफेक्ट ऑन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। जो ये वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स में जो आपका आएगा शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक, ऑप्शंस, फ्यूचर, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड चेक्स। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का एग्जैक्टली मतलब ये है। फिर हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे कि किस में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेटर रहेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव टोल्ड यू। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग which I would like to explain. In this world, nothing can be said to be certain except death and taxes. आप लोग कहेंगे ये इन्वेस्टर्स अवेयरनेस में ये 2 कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गए? तो देखिए इस वर्ड में डेथ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल तटस्थ है, मतलब ये हिल डुल नहीं सकता। तो उसी तरीके से टैक्स, जैसे हमें एक न एक दिन जाना होगा ये मालूम है, उसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको टैक्स देना है।
जब आपको टैक्स देना है तो आप इन दोनों चीज़ों से ना भागिए। आदमी इन दोनों चीज़ों से भागता है, डेथ और टैक्सेस। तो मेरा यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप टैक्स अपना ऑनेस्टली टाइम से चुकाएं। तो फिर आप लोग कहेंगे कि इफ़ेक्ट क्या हुआ। इफ़ेक्ट यहाँ पे हम ये आपको बताएंगे कि टैक्स आप इवेड ना करें, टैक्स आप सेव करें थ्रू टैक्स प्लानिंग। तो यू शुड सेव योर टैक्स थ्रू टैक्स प्लानिंग, और टैक्स का इवेजन ना करें। तो दो चीज़ें जब ये सर्टेन है, आपको पता है कि ये चीज़ होनी है, तो आप इनसे दूरी ना बनाएं, बल्कि आप इनके साथ में कोरिलेट करें। अब हमारा आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो पर्सन होता है जो इन्वेस्ट करता है। अब इन्वेस्टर्स ठीक है अपना पैसा लगाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है कि इन्वेस्टर्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा, हु प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इन्वेस्टर्स की ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करता है, और इस बात की गारंटी है अगर आपकी ग्रीवेंसेस हैं, आपने सेबी में कंप्लेन की है, तो आपकी ग्रीवेंसेस रिजॉल्व ज़रूर की जाएंगी। तो यहाँ पे ये बताना इसलिए ज़रूरी हो गया कि अगर इन्वेस्टर्स की कोई प्रॉब्लम है या कोई ग्रीवेंसेस है, तो वो कहाँ रिजॉल्व हो सकती हैं। वो हो सकती हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी हम लोगों को क्या करता है, सेबी का मेन फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। सेबी जो होता है वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, और इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए सेबी ने ये 3-4 चीज़ें डेवलप की हैं कि आप स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं थ्रू थंब। नेक्स्ट है यू कैन होल्ड योर सिक्योरिटीज़ इन डीमैटेरियलाइज फॉर्म। नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो 2 दिन के अंदर उसका पेमेंट या सेटलमेंट हो जाएगा। और इसके बाद में सेबी ने कई रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं जिसमें इंटरमीडिएट्स को रेगुलेट किया जा सके, मतलब इन्वेस्टर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि टैक्स का इफ़ेक्ट इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा। तो आप समझिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से बता देते हैं आपको, इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट। तो देखिए टैक्स का, चूँकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है तो वो हमें बताना, क्योंकि जो लिखा है वो बताना, फिर अपनी ओपिनियन देना है। तो इसमें ये दिया हुआ है आपका कि टैक्स जो है वो डिसइंसेंटिव का काम करता है, कि मतलब इससे इन्वेस्टर जो हैं वो एक तरीके से प्रमोट नहीं होते। इन्वेस्टर को ये डिस्करेज करता है टैक्स, क्योंकि इन्वेस्टर ये बोलता है कि मैं जो कमाऊंगा उसमें हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक मिथ्स है। तो आज मैं कोशिश करूंगा ये एक मिथ्स भी रिजॉल्व करूं। तो टैक्स का इफ़ेक्ट जो इन्वेस्टमेंट पे होता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि आप ये मान लीजिए टैक्स नहीं है, आपके पास 15 लाख रुपए हैं, आपने कहीं इन्वेस्ट किया। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं 15 लाख को, हम ये मान लेते हैं कि 10% रिटर्न मिलेगा। तो 15 लाख का 10% आपको मिलेगा 1,50,000 जब टैक्स नहीं है। अब हम दूसरा लेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स। अब आप ये मानिए कि टैक्स का हम इफ़ेक्ट लेने जा रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि आपकी 15 लाख फंड है, तो 15 लाख फंड पे आप मोटा मोटा मान लीजिए कि टैक्स है तो 3 लाख रुपए हमने टैक्स पे कर दिए। तो मेरा जो फंड 15 था, अब फंड मेरा बचा 12 लाख। अब इस 12 लाख को हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो जब इस 12 लाख को 10% पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमको रिटर्न मिलेगा 1,20,000। और 1,20,000 में ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये रिटर्न है, इस पे भी 10% टैक्स कटेगा। तो मोटा मोटा मान लिया कि 10,000 रुपये टैक्स कट गए।
तो 1,20,000 में हमको मिला 1,10,000। तो अब देखिए रिटर्न कंपेयर करेंगे तो टैक्स के पहले हमारा रिटर्न है 1,50,000 और टैक्स के बाद रिटर्न है मेरा 1,10,000। तो टैक्स की वजह से 40,000 रिटर्न कम मिला। ये तो पहला इफेक्ट। दूसरा, टैक्स के पहले मेरे पास फंड था 15 लाख और टैक्स के बाद फंड हमारा बचा 12 लाख। तो 3 लाख रुपए फंड कम हो गया और 40,000 इनकम मेरी कम हो गई। दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स। तो अब इसमें ये बताया गया कि टैक्स की वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिस्करेज होते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं वर्क नहीं करूँगा, सेविंग नहीं करूँगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, ये ऐसा वो सोचते हैं। तो ये उनकी एक मिथ्स है, मतलब मिथ्या है, इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो इंडिया इज़ अ स्टिल ग्रोइंग और डेवलपिंग कंट्री, इट कैन नॉट बिकम अ डेवलप्ड कंट्री लाइक अदर कंट्रीज़। तो हमें क्या करना चाहिए कि टैक्स ऑनेस्टली पे करना चाहिए और टैक्स को टैक्स प्लानिंग के थ्रू बचाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए मेरा ये आया, टैक्सेस हैव द डिसइंसेंटिव इफेक्ट ऑन द एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। क्यों? अगर टैक्स का कलेक्शन नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, ब्रिज, डैम, पोर्ट, एयरपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये नहीं होंगे। और आर्मी, पुलिस, सिविल आर्मी, ट्रैफिक आर्मी, इसको हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे? इनका पेमेंट कहाँ से होगा? इनका खर्चा पानी कहाँ से हम लोग निकालेंगे? तो इसके लिए टैक्स ज़रूरी। जब ये नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी। तो आप अपने ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें टैक्स चुराना है। टैक्स की चोरी नहीं करनी है, टैक्स की सेविंग करनी है थ्रू टैक्स प्लानिंग। देयर शुड नॉट बी इवेजन ऑफ टैक्स और अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। देयर शुड बी टैक्स सेविंग थ्रू टैक्स प्लानिंग। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो इम्पैक्ट आने वाला है वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। हाउ टैक्सेस अफेक्ट इन्वेस्टर्स। तो अब इसको 1 मिनट हम आपको दिखा भी देते हैं कि जब हमारा टैक्स होगा ऑन इनकम, फर्स्ट यू विल हैव टू पे द टैक्स, यू हैव लेस मनी, मतलब 15 का वो 12 बच गया था, टू इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक मार्केट एंड अदर इन्वेस्टमेंट। इफ़ यू हैव, जब आपके पास लेस मनी होगा तो रिटर्न भी कम मिलेगा। जैसे टैक्स के पहले रिटर्न आपका एग्जाम्पल में दिया था 1,50,000 था और टैक्स के बाद वो बचा था 1,10,000। तो इम्पैक्ट हुआ था कि 40,000 हमारा रिटर्न कम हो गया था। व्हाट इम्पैक्ट टैक्स कैन हैव ऑन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में टैक्स क्या करता है? सबसे पहले डिस्करेज करता है। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिस्करेज करेगा, क्योंकि उनकी एक धारणा होती कि मैं कमाऊं या मैं अर्न करूं, गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दें? तो भाई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दोगे तो गवर्नमेंट कहेगी फिर हम आपके लिए रोड क्यों बनवाएं, फिर आपके लिए जो आप हवा में उड़ते हैं एयरपोर्ट क्यों बनाएं, पोर्ट क्यों बनाएं, फ़ोन से आप लोग बात करते हैं तुरंत 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो गवर्नमेंट कहेगी फिर हम ये आपको सुविधाएं क्यों दें। अगर आपको अच्छी सुविधाएं लेनी है तो ऑनेस्टी से टैक्स पे करें। अगर आप ऑनेस्टी से टैक्स पे करेंगे तो आप चलेंगे लाइक लाइन, शेर की तरह चलेंगे। जैसे हमारे पीएम चलते हैं, उनकी चाल आप देखिए, वो ऑनेस्टी दिखती है। तो हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि आप टैक्स ऑनेस्टली पे करें और टैक्स बचाएं थ्रू टैक्स सेविंग। टैक्स का इफ़ेक्ट भी बता दिया कि टैक्स के इफ़ेक्ट से आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम और रिटर्न कम होता है,
लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये मल्टीप्लाई होगा, जो आपको फ्यूचर में उससे ज़्यादा रिटर्न देगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में पहुंचना है तो प्लीज़ पे योर टैक्स ऑनेस्टली। What is investment income for tax? This is the most important point which I would like to discuss. Investment income. अब इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड्स बट इज़ नॉट लिमिटेड टू, इसको आप सरल भाषा में समझ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो इंटरेस्ट और डिविडेंड अर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी में लगा दिया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कोशिश करिएगा कैपिटल गेन आपका लॉन्ग टर्म हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका टैक्स, अगर आप स्लैब इनकम 10 लाख से ऊपर पहुंचते हैं तो 30% है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल जो है वो 20% है। लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए की छूट, और उसके ऊपर है 10% टैक्स। तो कैपिटल गेन में आप टैक्स प्लानिंग लगाइए कि 112A सेक्शन का कैपिटल गेन होना चाहिए, जिसमें आप 1 लाख रुपए की छूट भी ले सकते हैं, और रेट ऑफ टैक्स होगा 10%। रेंटल और रॉयल्टी इनकम, तो आप जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है या कोई रेजिडेंशियल हाउस है, उसको आपने लेट आउट कर दिया तो उससे आपको रेंटल, मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉन क्वालिफाइड एन्युटीज़ जो दी गई हैं ये अनरिकग्नाइज्ड होती हैं, दीज आर नॉट रिकग्नाइज्ड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट, जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टाइमली, कह सकते हैं पीरियोडिकल, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। और आखिरी में दिया हुआ है कि बिजनेस, जब हम बिजनेस करेंगे तो उसमें फ़ंड क्या करते हैं, डिप्लॉय करेंगे, फंड लगाते हैं, तो उसमें हमें रिटर्न मिलता है। कैपिटल गेन में अब चूँकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू मच, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। तो कैपिटल गेन में आप कोशिश करें 112A वाला कैपिटल गेन होना चाहिए। What should investor know before investing? देखिए ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरा कि अगर इन फ्यूचर आप सरवाइव करना चाहते हैं तो ये 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए मैं कुछ इलस्ट्रेशन हिस्टोरिकल भी ले सकता हूँ अगर टाइम बचेगा मेरे पास। Before you make any decision, consider 3 areas of importance. These areas of importance. पहला दिया हुआ, ड्रा अ पर्सनल फाइनेंशियल रोड मैप। पहले आप रोड मैप तैयार कर लीजिए, मतलब एक खाका या मैप बना लीजिए कि हमें किस तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये देख लीजिए कि किस हद तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप कितनी रिस्क ले सकते हैं। एक पुरानी कहावत है, उतनी ही चादर, उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी आपकी चादर हो। तो ये सही, आप इसी के अंदर रहिए। और नेक्स्ट दिया गया है कि मिक्स क्या होगा, कि आप एफडीआर कराएंगे, कि इक्विटी शेयर लेंगे, कि प्रेफरेंस शेयर लेंगे, कि डिवेंचर लेंगे, स्टॉक लेंगे, फ्यूचर लेंगे, ऑप्शन लेंगे। ये अप्रोप्रिएट मिक्स में आएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। इसमें एक चीज़ हम आपको बता दें, आपको इन्वेस्टर 3 तरीके के मिलेंगे। एक इन्वेस्टर होते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा और पूरा वर्ल्ड खरीद लूँगा, करते कुछ नहीं है। एक इन्वेस्टर वो होते हैं जो कर देते हैं, सोचते नहीं, बस कर देते हैं, तो वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं करते हैं।
और एक वो इन्वेस्टर होते हैं जो पहले सोचते हैं, सोचने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करते हैं। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो पहले सोचें, विचारें, एक्सपर्ट की राय लें, फिर इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, बी केयरफुल। स्टॉक मार्केट में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट तब ना करें जब वो शेयर अपने पीक पे हो, क्योंकि कोई भी चीज़ पीक पे होती है तो उसका नीचे आना मस्ट होता, वो नीचे आएगी ज़रूर। अब आप ये कह सकते हैं कि मैं ये कैसे समझूं कि ये पीक पे है, तो इसके लिए आप उसकी हिस्ट्री एनालिसिस करें और ट्रेंड देखें कि ये कहाँ से शुरू हुआ था और ये कहाँ पे पहुँच गया है। तो एक मैच्योरिटी पीरियड या पीक पीरियड ज़रूर आता है, जिसके बाद इन्वेस्टमेंट नीचे आता है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, क्रिएट एंड मेंटेन इमरजेंसी फंड। तो अगर इन्वेस्टर इस फंड को 5 नंबर पॉइंट को ध्यान में रखे तो वो जीवन में कितनी भी मुसीबत उसके पास आ जाए, उसका इन्वेस्टमेंट कितना भी नीचे चला जाए, वो सरवाइव करेगा। इसमें देखिए मैं एक एग्जाम्पल लूँगा। इसमें आपने महाभारत देखी होगी, उसमें द्रौपदी के 5 पति थे, सबको पता है। तो दैट वाज द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर कौन थी? द्रौपदी। द्रौपदी को बड़ा प्राउड था कि मेरे 5 पति हैं, दे विल प्रोटेक्ट मी। ठीक, जब द्रुत कीड़ा स्टार्ट हुई तो युधिष्ठिर साहब अपना 5 भाइयों को हारे, मतलब इन्वेस्टमेंट चला गया और इन्वेस्टर को भी डुबो दिया, यानी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। अब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट जो इतना हाई इन्वेस्टमेंट था वो आप देखिए विद इन 1 आवर जो भी टाइम रहा होगा उसमें वो इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। तो कहते हैं कि आप ये बताना क्या चाहते हैं? इसमें बताना मैं ये चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आपका कभी भी जीरो हो सकता है। अब द्रौपदी ने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया? क्रिएट एंड मेंटेन एन इमरजेंसी फंड। तो आप कह सकते हैं कि वो इमरजेंसी फंड, तो बताइए वो है कहाँ इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड ये था कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का सर काटा था सुदर्शन चक्र से, तो वो चक्र जब रिटर्न उनके पास आया था तो उनकी उंगली में चोट, खून निकलने लगा था। तो द्रौपदी ने थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया था, अपनी साड़ी फाड़ के उनके पट्टी बांध दी थी। तो दैट वाज एन इमरजेंसी फंड। तो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी से कहा था कि ये ऋण तुम्हारा मेरे ऊपर उधार है, समय आने पे मैं सूद सहित चुका दूंगा। तो जब शेयर होल्डर्स दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी इन्वेस्टर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उस समय श्री कृष्ण भगवान ने इमरजेंसी फंड का यूज़ किया था। और द्रौपदी का जब चीर हरण शुरू हुआ उस समय उन्होंने उस टुकड़े को इतना सूद समेत वापस किया था कि वहाँ पे जो लोग बैठे थे वो कहने लगे कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है। तो वो बची क्यों? क्रिएशन ऑफ इमरजेंसी फंड। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो इमरजेंसी फंड ज़रूर क्रिएट करें जो उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाएगा। चूँकि टाइम का कम है तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज़ टैक्स प्लानिंग इन इन्वेस्टमेंट, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि टैक्स प्लानिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना टैक्स बचा सकते हैं। ध्यान रखिएगा टैक्स का इवेजन और इवेड मत करिएगा कि अगर टैक्स आप इवेजन या इवेड करते हैं तो सेक्शन 270A इनकम टैक्स की आप याद रखिएगा। उसमें मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम करते हैं तो टैक्स के अलावा 50% पेनल्टी है, और अगर अगर आप मिस रिपोर्टिंग करते हैं तो टैक्स के अलावा 200% पेनल्टी है। अगर आप अंडर रिपोर्टिंग करते हैं तो टैक्स तो देना ही देना है, 50% पेनल्टी है। इसके बाद
अदर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो प्लीज़ अवॉइड टैक्स इवेजन। तो टैक्स प्लानिंग के थ्रू देखिए, मैं आपको स्लाइड में बताता हूँ। इनकम टैक्स में डिडक्शन है, एग्जम्पशंस हैं और बेनिफिट्स भी बहुत दिए गए हैं। तो आप अपनी टैक्स सेविंग करिए थ्रू टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग मीन्स रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी बाय वे ऑफ एग्जम्पशन, पता वो इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। डिडक्शन 80C से 80U तक के आप डिडक्शन लीजिए। एंड बेनिफिट्स में आपकी रिबेट आती है, रिबेट के बाद अलाउंसेस आते हैं, और एक आता है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन जो होता है, हम लोग कैपिटल गेन जब निकालते हैं तो उसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन में यूज़ किया जाता है। तो यू सेव योर टैक्स थ्रू टैक्स प्लानिंग। अब टैक्स सेविंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन आपकी आती है, सेक्शन 80C, मोस्ट पॉपुलर। तो 80C में आप 1.5 लाख रुपए तक का नॉर्मल एग्जम्पशन ले सकते हैं। 50,000 रुपये अगर आप नेशनल प्लान स्कीम NPS में लगा देते हैं तो 50,000 रुपये तक का आपको और डिडक्शन मिल सकता। तो 80C में आप टोटल डिडक्शन 2 लाख ले सकते हैं। अब 80C में अगर आप 2 लाख नहीं 1.5 लाख लेते हैं तो आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी 46,800। और अगर आप 2 लाख की टैक्स सेविंग मतलब इन्वेस्टमेंट आप NPS में भी कर देते हैं तो आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी ₹62,400। इसके अलावा सेक्शन 87A है, अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं जाती है तो आप 87A में ₹12,500 की सेविंग ले सकते हैं। और इसके बाद में एक आपका आ गया है 80TTA, जिसमें अदर देन सीनियर सिटीजन 10,000 रुपये तक का डिडक्शन ले सकते हैं। एक सेक्शन आपकी है 80TTB, जिसमें आप सीनियर सिटीजन के लिए है 50,000 रुपये तक का डिडक्शन ले सकते हैं। 80D में भी 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये थी टैक्स का इफ़ेक्ट जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कम टाइम में। तो आप ध्यान रखिएगा, अवॉइड सेक्शन 270A, आप सेक्शन 270A को अवॉइड करिए जिसमें पेनाल्टी से बचिए। दूसरा नंबर है इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए। तीसरा नंबर है कि आप टैक्स बचाएं थ्रू टैक्स प्लानिंग। और फोर्थ पॉइंट जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म अवॉइड करिए, लॉन्ग टर्म में करिए। नेक्स्ट आपका आता है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो पहले सोचें, सोचने के बाद एक्सपर्ट की राय लें और राय लेने के बाद में आप इन्वेस्टमेंट करें। तो ये हुई इन्वेस्टर्स अवेयरनेस और उसमें बताने वाली बात कि इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो टैक्स का इफ़ेक्ट ज़रूर हमने बताया कि टैक्स के थ्रू आपकी जो इनकम है वो कम हो जाएगी और फंड कम हो जाएगा, लेकिन ये आगे क्या करेगा, डेवलपमेंट में आपका टैक्स जो है वो हेल्प करेगा। और जिसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा तो आज जो हमने सेक्रीफाई किया है थ्रू टैक्स वो हमें अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इन फ्यूचर मिल जाएगा। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्ट करें सोच समझ के करें, जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। लॉन्ग टर्म का कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया, शॉर्ट अमाउंट इन्वेस्ट किया और ह्यूज रिटर्न मिल रहा है तो आप समझ लीजिएगा आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा, डूब जाएगा। इसके बाद एक क्रिप्टो करेंसी आपकी आती है, तो क्रिप्टो में आप कोशिश करें कि पैसा ना लगाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने क्रिप्टो में पैसा लगाया, अब मैं उसको चेक नहीं कर रहा हूं क्योंकि थोड़े दिन बाद मैंने क्रिप्टो में चेक किया था तो जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो हाफ हो चुका था। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।
क्रिटिकल है, बट वी आर ट्राइंग। ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास। उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी। राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी। 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए। हार्ट अटैक आया है। देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है। डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, ओटीपी, पिन कभी किसी को ना बताएं। सावधान रहें, समझदार बने। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो। साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। यार वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो क्यों मुझसे झूठ कहने लगा? वो कह रहा था इस स्कीम में पैसा लगाने पर 6 महीने में 10 के 20,000 हो जाएंगे। और तूने मान लिया? ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है? 10,000 के 20,000। एक काम कर, ये ले 100 रुपये पकड़ना और जाके 10 किलो लड्डू लेके आ। अबे पागल है क्या? 100 रुपए में 10 किलो लड्डू आते हैं? अबे इसके तो 1 किलो लड्डू भी नहीं आएंगे। जब इतना जानता है तो ये नहीं जानता कि 6 महीने में 10,000 के 20,000 नहीं होते। समझदारी बढ़ा, लालच नहीं। लालच में न आए, समझदारी बढ़ाएं। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। कैनवास में रंग भरकर उसे जीवित बना देना एक कला कहलाती है। इसी तरह अपनी जमा पूंजी बढ़ाकर जिंदगी बना लेना भी एक कला ही है। मैंने भी ये स्टूडियो ऐसे ही बनाया है, पाई पाई जमा करके। मुझे भी लोग फोन करते हैं, मेल करते हैं, मुझे कन्विंस करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बहुत अच्छी है। उन लोगों के भी रेफरेंसेस देते हैं जिन्हें फ़ायदा हुआ है, पर मैं अपनी रिसर्च खुद करती हूँ। आपको भी यही करना चाहिए। सरकार की कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर जाकर आप अपने निवेश से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं, और ये वेबसाइट्स हैं मैं अपने पैसों को लेकर सावधान रहती हूँ, आप भी रहिए। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार। आज का सेशन है व्हाट इज़ द वेंचर कैपिटलिस्ट एंड हाउ इट इज़ वर्क। तो आज हम ये जानेंगे कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका प्रोसेस क्या है।
तो व्हाट इज अ वेंचर कैपिटलिस्ट? एक्चुअली वेंचर कैपिटलिस्ट इज ए टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी, और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना फंड देते हैं, एंड देन these venture capitalist firm invest their money into the entrepreneurs, into the startups and small businesses. अब एक वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, कैसे वो अपने प्रोसेस में टाइम स्पेंड करते हैं, ये हम देखेंगे कि उनका एक्चुअली मेन जो टाइम स्पेंड होता है, वो टाइम स्पेंड होता है promoters, how the promoters work, how the promoters behave, how the promoters work in their segment. So in this way the venture capitalist firms analyze the startups, and after the analyzing they invest money for the growth of that startups. So that venture capitalist, what is the की टेकअवेज फॉर द वेंचर कैपिटल? एक्चुअली वेंचर कैपिटलिस्ट के अगर हम पैरामीटर्स देखें तो क्या है? वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग इज फंडिंग प्रोवाइडेड टू कंपनीज एंड एंटरप्रेन्योर्स. इट कैन बी प्रोवाइडेड एट डिफरेंट स्टेजेस. जो डिफरेंट स्टेजेस हैं दैट वी विल लुक आफ्टर दैट ऑफ देयर इवेल्युएशन, ऑल्दो इट ऑफन इन्वॉल्व्स अर्ली एंड सीड राउंड फंडिंग. वेंचर कैपिटल फंड्स मैनेज pooled investment in high growth opportunities in startups and other early stage firms and are typically only open to accredited investors. So what is the process? Actually जो venture capital firms हैं वो different investors से पैसा collect करती हैं और उनको according to investors interest, हर एक किसी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, और उसी इंटरेस्ट के हिसाब से वो उस पैसे को जो स्टार्टअप्स हैं या स्मॉल बिजनेस हैं उनमें डिप्लॉय करती हैं. और क्राइटेरिया देखे जाएंगे कि क्या क्राइटेरिया है और किस स्टेज पर ये कंपनी है. आइदर इट्स अ सीड फंडिंग, आइदर इट्स अर्ली स्टेज फंडिंग, आइदर इट्स अ ग्रोथ स्टेज फंडिंग. तो हम इस सेशन में हम देखेंगे कौन कौन से स्टेजेस हैं जिन पे कि वेंचर कैपिटल फर्म्स फंडिंग करती हैं. सो एक्चुअली वेंचर कैपिटल ये वर्ड आया कहाँ से? वेंचर कैपिटल एक्चुअली में इवॉल्व हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन यूएस एंड यूरोप बहुत सारे स्टार्टअप्स इवॉल्व हुए इन 1950s और 1960s में. तो उनको फंडिंग करने के लिए वेंचर कैपिटल इवॉल्व हुआ फंडिंग करने के लिए. नाउ हाउ द वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री वर्क्स? एक्चुअली इसके 4 पैरामीटर्स हैं, या हम कहें इसके 4 पिलर हैं वेंचर कैपिटल के. फर्स्ट वन इज द एंटरप्रेन्योर, सेकंड वन इज वेंचर कैपिटलिस्ट, थर्ड इज द प्राइवेट इन्वेस्टर एंड फोर्थ वन इज द इन्वेस्टमेंट बैंकर. अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर कोई स्टार्टअप आइडिया लेकर के आता है, देन वो इसकी प्रेजेंटेशन के व्हाट विल बी द रेवेन्यू मॉडल, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शंस, ये वेंचर कैपिटलिस्ट को वो प्रेजेंट करते हैं कि आप एक्चुअली में हमारे पास पैसा नहीं है, वी नीड फंडिंग सो दैट वी कैन रन द बिजनेस. तो एक्चुअली वेंचर कैपिटलिस्ट इस पैसे को, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स का जो पूल है उससे वो पैसा कलेक्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे डिप्लॉयड दैट मनी इनटू द रिलेवेंट स्टार्टअप्स इन विच द प्राइवेट इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड. जैसे जैसे वो कंपनी या जैसे जैसे वो स्टार्टअप्स ग्रो होता है, देन वो वेंचर कैपिटलिस्ट फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास लेकर के जाते हैं सो दैट वो उसका एक आईपीओ ला सकें और जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको एक हैंडसम रिटर्न दे सकें. सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस. जो वेंचर कैपिटल का जो इकोसिस्टम है वो वर्क करता है, वो इस टोटली इकोसिस्टम पे वर्क करता है. नाउ अब क्या प्रोज एंड कौन से एक वेंचर कैपिटल रेज करने के? एक स्टार्टअप अगर वेंचर कैपिटल से फंड रेज करे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? तो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोज देखते हैं कि व्हाट आर द प्रोज ऑफ वेंचर कैपिटल्स. सबसे पहला, प्रोवाइड्स अर्ली स्टेज कंपनी विद द कैपिटल नीडेड टू बूट स्ट्रैप ऑपरेशन. इस स्टेज में एक्चुअली स्टार्टअप्स को या एंटरप्रेन्योर्स को फंड की नीड होती है जो उन्हें नहीं मिल पाती है, जो वेंचर कैपिटल्स प्रोवाइड करते हैं. सेकंड,
अनलाइक बैंक लोन्स, कंपनी डू नॉट नीड कैश फ्लो और एसेट्स। जब भी आप कभी भी बैंक्स के पास जाएंगे फंडिंग के लिए, स्टार्टअप्स के साथ बेसिकली प्रॉब्लम ये रहती है कि उनके पास, या एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉब्लम होती है, ना तो उनके पास कोई एग्जिस्टिंग कैश फ्लो है, ना कोई एग्जिस्टिंग कैश फ्लो की हिस्ट्री है, और ना ही कोई एसेट्स है जिसे वो कोलेटरल कर सके। सो this is the advantage with VC funding, that they don't need any type of cash flow and they don't need any type of assets to mortgage with the VC funding. They will provide you funding. So VCs can also provide mentoring and networking services to help a new company secure talent and growth. This is the biggest advantage to go with the VC. अब इसमें क्या है? Actually VCs एक भी वेंचर कैपिटल फर्म्स पर ईयर 10 to 12 इन्वेस्टमेंट करती है, और इनका एक पूल है जिसमें कि उनके बहुत, दे हैव सो मैनी मेंटोर्स, सो मैनी मार्केटिंग रिसोर्सेज। तो बेसिकली व्हाट आर द मेन एडवांटेज टू गो विद द वीसी? द मेन एडवांटेज इज कि अगर आप वीसी के साथ जाएंगे तो उनके साथ में आपको बहुत सारे मार्केटिंग रिसोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे आप स्ट्रेटेजिक टाइप्स कर सकते हैं जिनके साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं, एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ सकता है स्ट्रेटेजिक टाइप से। सो दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो बेसिकली दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज टू गो विद द वेंचर कैपिटलिस्ट। सो अब नाउ ईच एंड एवरी थिंग हैज़ अ कॉन्स एज वेल। तो उनके कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज भी हैं वेंचर कैपिटलिस्ट में। तो वो क्या है? तो नाउ वी विल नो VCs tend to demand a large share of equity companies that accept VC investment may find themselves losing creative control as their investor demand immediate returns. So basically VC फंड देती हैं, ना तो वो कोई कोलेटरल आपसे डिमांड कर रहे हैं, ना ही कोई एग्जिस्टिंग कैश फ्लो वो डिमांड कर रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट दे नीडेड अ इक्विटी शेयर, they needed a share in your shareholding, so with the existing promoters. So this type of facility requires to the venture capitalist. Second, अब एक्चुअली और क्या क्या एक नुकसान है? VCs always want to exit from the company, exit from the startup, so that they can get a handsome return on their investment. For example, if they have made any investment in any startups or any entrepreneurship, so they will exit after 2 or 3 years, they will exit. So this is their tendency. तो ये एक नुकसान है स्टार्टअप्स को या एंटरप्रेन्योर्स को कि एक्चुअली वीसी उनके साथ लॉन्ग टर्म कम्यूट नहीं करते, लॉन्ग टर्म उनकी जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन नहीं होती है। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटल? तो बेसिकली इसकी 3 स्टेज है। इसको हम अगर टाइप्स कहें तो इसके बजाय हम ये कहेंगे इसके स्टेजेस क्या क्या हैं। तो वेंचर कैपिटल बेसिकली 3 स्टेजेस में रेज किया जाता है। फर्स्ट वन इज प्री सीड फंडिंग, सेकंड वन इज सीड फंडिंग, थर्ड वन इज अर्ली स्टेज फंडिंग। ना अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके फर्स्ट ऑफ ऑल प्री सीड फंडिंग, जैसा कि नाम से इसका पता चल रहा है कि व्हाट इज द प्री सीड फंडिंग। प्री सीड फंडिंग इज अ फंडिंग, जैसे कोई बीज में से पौधा निकल रहा है उससे पहले इसे कहते हैं प्री सीड फंडिंग। तो बेसिकली जब कोई आइडिया है, आइडिया स्टेज में कोई कंपनी है और उस कंपनी को आइडिया स्टेज में कोई कंपनी है और उसको फंडिंग की नीड होती है सो दैट दे कैन डेवलप अ प्रोटोटाइप, they can test commercially. For that funding they go to venture capitalist and it is called pre-seed funding. वहाँ वो वेंचर कैपिटलिस्ट से वो एंटरप्रेन्योर फंड्स भी लेते हैं और एक मेंटरशिप भी लेते हैं और मार्केटिंग रिसोर्सेज भी लेते हैं सो दैट दे कैन ग्रो। नाउ सेकेंड स्टेज इज द सीड फंडिंग। व्हाट इज द सीड फंडिंग? फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे इसको माने कि जैसे पौधा हमने ज़मीन में लगा दिया है और अब उसमें बीज हमने ज़मीन में लगा दिया है और उसमें से अब पौधा निकलने वाला है, तो अब उसको खाद और पानी की ज़रूरत है, तो इट इज़ कॉल्ड सीड फंडिंग। जैसे कोई प्रोडक्ट रेडी है और अब उसे मार्केट में लॉन्च करना है, एट दिस स्टेज एज वेल देयर इज़ नो रेवेन्यू, सो
the startup or entrepreneur need funding. So these companies will get funding from venture capitalists, and it is called the seed round or seed funding. Now the third one is early stage funding. जैसे ही कोई बिजनेस डेवलप्ड हो गया, it will need additional capital to ramp up production and sales before it can become sale funding. The business will then need one or more funding rounds, typically denoted A, B and C follow on. तो what is the early stage funding? जैसे ही कोई स्टार्टअप ग्रो करता है और उसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया या सर्विस देना स्टार्ट कर दिया, सेल करना स्टार्ट कर दिया, तो ग्रेजुअली रेवेन्यू आने स्टार्ट हो जाएंगे. देन उसको मार्केटिंग करनी है, प्रमोशन करना है, टीम बिल्डिंग करनी है, फर्दर रिसर्च करनी है, फर्दर डेवलपमेंट करना है, कोई कैपेक्स करना है, ओपेक्स करना है, तो उसके लिए उन्हें फर्दर फंडिंग की नीड होगी. और ये इसके लिए फर्दर राउंड्स हैं, दैट इज कॉल्ड सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी. इन तीनों राउंड्स के देयर आर डिफरेंट टिकट साइजेस इन विच वेंचर कैपिटलिस्ट मेड इन्वेस्टमेंट. Obviously, they see what are the current revenue, what is the current top line, what is the bottom line of the startup, what is the existing status of the small business. इन पैरामीटर्स के हिसाब से वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग देते हैं. एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर. कभी कभी ये कन्फ्यूज़न होता है कि वेंचर कैपिटल क्या है और एंजल इन्वेस्टर क्या है. दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आज आपको क्लियर करता हूँ. वेंचर कैपिटल बिलोंग्स टू अ कंपनी और अ फर्म. इट्स नॉट अ इंडिविजुअल, इट्स अ कंपनी or a firm. It's a group of individuals. Second, their average investment in a company of venture capitalist is $7 million. It's average, not an exact figure. It's an average figure. तो बेसिकली जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो एक कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका जो एवरेज फिगर रहता है वो $7 million रहता है. थर्ड वन, जैसा मैंने आपको पहले बताया, बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो अपने मार्केटिंग रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास एक टीम होती है जो कि स्किल्ड टीम है, मेंटोर्स की, मार्केटिंग रिसोर्सेज की, जो अपने इन्वेस्टी कंपनी है उसको वो प्रोवाइड करते हैं. अब हम आते हैं एंजल इन्वेस्टर पर. एंजल इन्वेस्टर क्या है? बेसिकली एंजल इन्वेस्टर इज अ सिंगल कंपनी, इट्स अ सिंगल इंडिविजुअल. सो अगर हम उनका टिकट साइज देखेंगे तो वो बेसिकली रहता है $25,000 और $1 लाख के बीच में रहता है. अगर कभी कभी जो एंजल इन्वेस्टर हैं वो को लैंडिंग भी करते हैं, वो ज्वाइन होकर के 2 और मोर जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो ज्वाइन होकर के लैंडिंग देते हैं, फंडिंग देते हैं. देन ये 0.7 मिलियन के राउंड, $0.7 मिलियन जो राउंड है उसके आसपास ये टिकट साइज उनका जाता है. और जो एंजल इन्वेस्टर, दे बेसिकली फोकस ओनली ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस. दे नेवर प्रोवाइड अ मेंटोरशिप, दे नेवर प्रोवाइड मार्केटिंग रिसोर्सेज. सो और बेसिकली जो एंजल इन्वेस्टर्स का जो फोकस रहता है वो हमेशा रहता है अर्ली स्टेज कंपनीज पर जो कि फाइनेंशियली और टेक्निकली डेवलपमेंट स्टेज में हैं. अब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेंचर कैपिटल? वो काम कैसे करते हैं, फंड कैसे देते हैं? जैसे कोई स्टार्टअप है, अब उसने अपना उसे पैसा, दे नीडेड द फंड, देन हाउ दे विल गेट द फंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टार्टअप विल सबमिट हिज प्रपोजल टू द वेंचर कैपिटल थ्रू देयर वेबसाइट, थ्रू मेल आईडीज, और देयर आर सो मैनी चैनल्स जिनके थ्रू एक स्टार्टअप अपना प्रेजेंटेशन और प्रपोजल वेंचर कैपिटल को सबमिट कर सकता है. After that venture capital team will evaluate, they will make a due diligence, thorough investigation कि what is the promoter strength, what is the existing capabilities of the promoter, what is the existing experience of the promoters, what is the existing cash flow in the company. If there is no any cash flow, what is the product, whether it is scalable or not, what is the
existing team size, what is the market they are looking for, कि जैसे कोई स्टार्टअप है वो किस मार्केट को फोकस कर रहा है. अगर हम एक इंस्टाग्राम या कुछ इस तरह के प्रोडक्ट की बात करें तो ऑब्वियसली वो टीनेजर्स सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं टीनेजर्स के लिए. तो वेंचर कैपिटल इसको फोकस करते हैं कि स्टार्टअप किस सेगमेंट को फोकस कर रहा है, जोग्राफिकली, एज वाइज और country wise. They see this type of things. Now venture capital वेंचर कैपिटल्स अलग अलग स्ट्रीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं. हर एक वीसी फर्म्स ईच एंड एवरी स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करती. ये एक बेसिक प्रॉब्लम्स है जो स्टार्टअप्स को आ रही है कि वो जाते हैं प्रपोजल सबमिट करते हैं लेकिन उन्हें कोई भी फीडबैक नहीं मिलता है. तो बेसिकली इशू क्या है? इशू ये है कि हर एक वीसी फर्म के पास में डिफरेंट टीम्स हैं जो कि डिफरेंट एक्सपर्टाइज है उनके पास फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट. फॉर एग्जांपल अगर कोई वीसी हेल्थ केयर में है तो वो हेल्थ केयर में ही फंडिंग देना प्रीफर करते हैं रेदर देन फंडिंग इन टेक्नोलॉजी सेगमेंट. तो ये जो है तो ये इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है बिफोर गोइंग टू एनी वीसी कि व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट टाइप ऑफ segment, what type of market the venture capital is interested. एक और वर्ड आपने सुना होगा, प्राइवेट इक्विटी. मैंने पहले आपको डिफरेंस बताया एंजल इन्वेस्ट बिटवीन वेंचर कैपिटल एंड एंजल इन्वेस्टर. अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी. तो एक्चुअली वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी में डिफरेंस क्या है? तो जो प्राइवेट इक्विटी है वो प्राइवेट इक्विटी फर्म जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है. एक्चुअली प्राइवेट इक्विटी फर्म्स मीडियन फाइनेंस भी प्रोवाइड करती हैं, वो एक लिवरेज बाई आउट भी देती हैं, प्राइवेट इक्विटी प्लेसमेंट भी देती हैं और बेसिकली उनका जो टिकट साइज रहता है दैट इज लार्जर देन वेंचर कैपिटलिस्ट. अच्छा, एक बेसिक डिफरेंस है वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी में, जो कि वेंचर कैपिटल फर्म्स हमेशा ग्रोइंग कंपनीज में या इधर आप कहें स्टार्टअप्स में, टेक बेस्ड कंपनी में, इधर ये एग्री टेक हो, हेल्थ टेक हो, एडू टेक हो, फिन टेक हो, इनमें इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करती हैं. प्राइवेट इक्विटी फर्म्स बेसिकली उन कंपनीज में प्रीफर करती हैं जिनका एक एग्जिस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रेडिशनली उन्होंने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर दिया है, उनमें वो पैसा लगाती हैं. वेंचर कैपिटल फर्म्स जो हैं वो एक छोटे शेयर के लिए भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं, जैसे 10%, 15% और मोस्ट टू मोस्ट 20%. जहाँ हम प्राइवेट इक्विटी की बात करेंगे तो दे विल टेक 30%, 40%, a large share in the existing company. Now, एक जैसे मैंने आपको पहले बताया वेंचर कैपिटल फर्म पर ईयर 10 to 12 या 10 to 15 या मोर देन दिस इन्वेस्टमेंट पर ईयर अपने फंड में से करती हैं. प्राइवेट इक्विटी फर्म्स दे मेक इन्वेस्टमेंट ओनली 4 to 5 विद इन अ ईयर. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस. सो बेसिकली प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो है वो एक कंपनी में ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का उनका एक प्रेफर्ड एरिया है. जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकें. रीज़न बीइंग जो स्टार्टअप्स है वो अभी अर्ली स्टेज में है, उसमें लॉस हो सकता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो वेंचर कैपिटल 10 to 12 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं. इसकी कई सारी कंपनीज इंडिया में वेंचर कैपिटलिस्ट में भी काम कर रही हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में भी काम कर रही हैं. अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो आप चूज करें वेंचर कैपिटलिस्ट को. प्राइवेट इक्विटी दे विल नॉट कम टू यू, दे विल नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन यू, ओनली द वेंचर कैपिटल कैन मेक ए इन्वेस्टमेंट. और वो उसके साथ साथ आपको मार्केटिंग रिसोर्सेज भी देंगे जो अर्ली स्टेज में जो आपको मेंटरशिप की नीडेड है कि हाउ टू grow the product, how to develop the product, or how to market, how to digitally market, how to strategic tie-up. They will arrange you these things. The venture capital firm will arrange you these things.
सो बेसिकली आज हमने ये जाना कि वेंचर कैपिटल फर्म्स जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं, किस सेक्टर में काम करती हैं, उनका क्या टिकट साइज है, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स एंड प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। इसके साथ ही हम आज का सेशन यहीं पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। Hello viewers, this MA program in Environmental and Occupational Health focuses on the relationship between people and their environment and fosters safe and healthy communities, and this is of utmost importance. This program is an MA in Environmental and Occupational Health. The type of the program is a master's program and the medium of instruction will be in English. The duration of the program will be a minimum of 2 years and a maximum of 4 years. The target group will be a graduation from any discipline. Mainly the professionals working in environmental and occupational sector and non-governmental organizations are welcome to join. Doctors, nurses, paramedical graduates and employees can join the course. Employees from the Central Pollution Control Board, civil servants of the state and central governments, faculty, researchers and students in universities, research organizations and colleges will find this program very interesting. Graduates aspiring to pursue a career in environmental management, occupational health and safety, industrial health and safety will also find this program of useful relevance. The job opportunities for this program is tremendous. They can work as environmental health and safety specialist, occupational health and safety specialist in various organizations, HSE coordinator and protection officers. They can also work as worksite wellness coordinators, public administration and safety professionals. They can also work as industrial hygienists and ergonomists in the various organizations. Then the safety and environmental health managers, toxicologists, health and safety engineering specializations are also very important. The objectives of this program include the following. They will discuss the impact of the environmental hazards on human health. Then they will describe the policies, laws, standards and the measurement techniques and applications in different occupational setups. They will also help to develop mitigation strategies to contain and manage environmental and occupational hazards for positive health. Finally, they will also help to exhibit the knowledge and skills that are needed to improve the environmental sustainability of human health systems. First year courses of the MA program include Introduction to Environmental Health, Environmental and Occupational Hazards, Environmental Law and Management, Environmental Toxicology, Occupational Health and Safety Project Work, Environmental Impact Assessment for Environmental Health, Health Care, Agriculture and Allied Sector, Industrial Sector. The second year MA courses include Gender Issues in Work, Employment and Productivity, Disaster Management, Sustainable Natural Resource Management, Safety Philosophy and Principles of Accident Prevention, Disaster Medicine and Global Climate Change, Fundamentals of Mental Health, Gender Issues in Agriculture, Rural Livelihoods and Natural Resource Management, Globalization, Environment and Development, and Introduction to Geoinformatics. The instructional system that is followed at IGNOU includes the multimedia approach, the self-learning materials, audio-video programs, assignments, counseling sessions, project work,
teleconferencing and interactive radio counseling are conducted time to time every month for the benefit of the learners. The self-instructional material is available on the EMPC-IGNOU website and also the printed material. The assignments are also freely available and they can be downloaded from the IGNOU website on the students zone. After successful completion of the first year, the learners can get a postgraduate diploma with an exit option, and the term and examination is held twice a year in June as well as in December. The admission link for the program is ignouadmission.samarth.edu.in. For all queries and support, the program coordinators Professor B. Rupini, Dr. Sushmita Bhaskar and Professor Ruchika Cuba from the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies and School of Health Sciences. I hope you find this course very informative and we invite you to join for this course. Thank you. Hello learners, I welcome you all to this teleconferencing session on mountain building theories. This is for our core course on physical geography, which is for a BSc general program with geography as one subject, and this topic is related to the second block, which is on lithosphere. So after viewing this teleconferencing session, you should be able to define mountains, distinguish between different forms of mountains, critically discuss the mountain building theory of Covert, and discuss the mountain building theory of Holmes, and distinguish between the above two theories. Although we have another theory, that is plate tectonic theory, which is also related to mountain building, but in this session we are covering only Covert's theory and the Holmes convection current theory, because for plate tectonic theory we need a separate teleconferencing session, because it not only caters to the mountain building but also explains continental drift and various tectonic events. So we need a separate session on plate tectonics theory, and after this session we will take up that session. So now what are mountains? Mountains are significant relief features of second order on the Earth's surface. Now what do you mean by second order, first order? Now in this figure you see that the landforms are divided into various orders. The landforms of first order are the continents and oceans,
which is a broad division of the landforms, and then features of the continents or the oceans are the second order landforms. So, mountains, plains, plateaus are the features of the continents and they are the second order. Similarly, in the oceans we have continental shelf, continental slope, ocean basin, deeps, which are the second order landforms of the oceans. Similarly, landforms of third order are peaks, coals, which are formed by more complex processes occurring in the second order landforms of both continents and oceans. So, mountains are the significant relief features of second order on the earth's surface. Now, there are several forms of mountains. These are the terminologies like mountain ridges, mountain range, mountain chain, mountain system, mountain group, which to a non-geographer it would be like similar terms, but you being a geographer you need to differentiate between these terminologies and you need to be acquainted with them. So, what is mountain range? It is a system of long, narrow, high hills. And what is mountain range? It is a system of mountains and hills having several ridges, peaks and summits, but all are of the same age. But in case of mountain chain, you see there are several parallel long narrow mountains, but they are of different periods. So, you have to differentiate between like mountain range are of the same period, same age, mountain chains are of different periods. Now, what is mountain system? These are different mountain ranges of the same period, and mountain groups are several unsystematic patterns of different mountain systems, and cordillera are the most complex ones, that is the several mountain groups and systems forms cordillera. That means in a cordillera you will find several mountain groups, chains, systems, ranges, etc. Now, coming on to the theories of mountain building, there are theories based on two types like theories based on horizontal forces and theories that are based on the vertical forces. The theories that are based on the horizontal forces are again divided into two types, like those which are the contraction theories like Kober and Jeffries were contractionists and they propagated the theory based on contraction theory. Now, another type of theories based on horizontal forces was related to drifting of continents like Taylor, Wegener. We have studied about drifting of continents or the continental drift theory of Wegener in the previous session, and in this session also you may recall that drifting of continents, while explaining the drifting of continents, Wegener had also explained the mountain building theory. Similarly, Holmes' convection current theory is also related to drifting of continents, and similarly plate tectonic theory is also based on the drifting of continents concept. Theories based on vertical forces are undulation and oscillation theories of Harton. But at this level we are focusing more on the Kober's theory, Holmes' theory and plate tectonics theory. And in this particular session we are dealing only with the Kober's theory and Holmes' theory. Now, coming on to the geosynclinal orogeny theory of Kober. First you know some of the basic things, that Kober was a German geologist and he wrote a book Der Bau der Erde, in which he gave a systematic description of the Earth's features. His theory, as I mentioned already, was based on the contraction concept, and this contraction concept was related to the cooling of Earth, which due to which cooling the contraction of Earth was there, and then a stress kind of force was generated, and this force was horizontal and it led to the formation of mountains. You will understand this better when I explain it with the help of figure. And then in the geological history, geological past, our globe was characterized by rigid masses and geosynclines. So, these rigid masses were the continental masses and geosynclines were long, wide, shallow water
depressions characterized by sedimentation and subsidence. So these geosynclines were bordered by the rigid masses that were also called forelands. Now Covert defined the process of mountain building or orogenesis as the process which links these rigid masses with the geosynclines. Now as I told you that geosynclines were long, narrow, or there was some differences between the geologists whether it was narrow or wide, but they were long, wide, shallow depressions, and which was characterized by sedimentation from the surrounding forelands, and after the sedimentation occurred, they put enormous pressure on the geosynclines, due to which they underwent subsidence, and this subsidence generated a stress force due to which the forelands moved towards each other, and the sediments in the geosynclines were squeezed, buckled and crumbled in the form of mighty fold mountains. So this is the basic of the geosynclinal origin theory of Covert. Now you need to know some of the terminologies, like surrounding rigid masses were also called cratogene by Covert, and these were like Canadian Shield, Baltic Shield, Siberian Shield. These are all the ancient land masses, Chinese Massif, Peninsular India, African Shield, etc. And he was of the opinion that mountains are formed from the sediments of the geosynclines. Now dealing with the mechanism of the theory, Covert's theory takes place in 3 stages. Like first is the lithogenesis, second is orogenesis, and the third is glyptogenesis. Lithogenesis is the basic creation of geosyncline. As I told you that the geosynclines were water bodies that were surrounded by the rigid masses, and it happened that the sediments were brought to the geosynclines by various agents of denudation or erosional agents, and due to these sediments they put enormous amount of pressure on the geosynclines, and then they underwent a sort of subsidence. So this was the basic formation of geosynclines. So lithogenesis is related to the creation or the formation of geosynclines, which is characterized by sedimentation and subsidence. And once the force is generated due to subsidence, a stress or motive force is generated, which brings the 2 forelands surrounding the geosynclines. These are the geosynclines, and these are the forelands surrounding the geosynclines. When there is subsidence along the geosynclines, the forelands are brought towards each other due to a stress force, and which leads to the crumbling and buckling of all the sediments, or squeezing of all the sediments into the mighty fold mountains. So Covert also explained that when maybe there is all the sediments are formed into the fold mountains, or sometimes there is a median mass, that is there is a plateau formed in between, and only the marginal areas are folded. So what happens that when the stress force is not that high, or when there is a decrease, when there is a wide geosyncline, then only the marginal areas are folded. And what happens, the central area or the median mass, he called Swiss change Burge. He gave the terminology of the median mass or the central area, which is not folded, but though it is uplifted, it is a kind of tableland, and it is the median mass or Swiss change Burge. And the marginal areas which were folded, the marginal areas of the geosynclines which underwent folding were called Ranketten by him. So these are the terminologies you should remember: Swiss change Burge, the median mass which is not folded, which is in the form of a plateau or a tableland, and Ranketten, which are the marginal ranges.
So, you can see there are several examples of median mass, and with the help of Cobert's theory, he explained all the alpine fold mountains of Eurasia. Like you see, examples of median mass are found, like Hungarian median mass is between the Carpathians and Dinaric Alps. Tibetan plateau is between the Kunlun and the Himalayas. Iranian plateau is between Zagros and Elbrus. Mediterranean Sea is between the Pyrenees and Atlas. Anatolia plateau is between Pontic and Taurus mountains. So, these are several examples of median masses, and you know the median mass can be in the form of plateau, can be in the form of sea also, like Mediterranean Sea I explained, it is between the Pyrenees and Atlas. Now, the third stage, this stage was the second stage when the mountains were forming, and the third stage is the Glyptogenesis, which sees a very gradual rise in the mountains, and it also experiences the denudation by fluvial and other processes, and there is a kind of lowering of the height of mountains. So, a kind of balance is maintained in this Glyptogenesis state, where there is a very gradual rise in the mountains, but they are again leveled or lowered by the agents of denudation, and the height of the mountain decreases. So, this is the last stage of Covert related to mountain building. You see in this figure I am showing, like in this figure you see these, this is the geosyncline part, and these are the forelands. These are the forelands surrounding forelands or rigid masses surrounding the geosynclines, and from the forelands sediments are brought over here, and sediments are accumulated in the geosynclines, and after that it subsides, and then a stress force or a compressional force is generated, due to which the marginal ranges in this figure are getting folded, and there is a median mass in between the two marginal ranges. And as I told you, if the geosynclines are narrow, then maybe entire mass will be folded like this here also, and there will be no median mass. This is also one case. So, in this figure it is very clear. Now, coming on to the evaluation of Cobert's theory, there are several criticisms related to Cobert's theory. His force of contraction or the compressional force generated due to subsidence was criticized by various scholars, who said that such force is not sufficient, that may cause mighty fold in the geosynclines and give rise to fold mountains. These are not that much sufficient force, and besides there was a scholar Suez, who viewed that only one side of the geosyncline is moving and the other part is stationary. However, his concept, the concept of Suez, was further refuted when plate tectonics theory validated the Cobert's concept that both the forelands were moving, because in case of plate tectonics it was found that both the forelands in case of Himalayas were moving, like African landmass and Eurasian landmass, both the landmasses were moving, and the mighty Himalayas fold mountains were formed in this way. And there is one more criticism related to Cobert's theory, like he was able to explain the only those mountains which had the east-west axis, like Himalayas or the all the alpine fold mountains of Eurasia, but he was not able to explain the mountains which are having the north-south axis, like the Rocky Mountains of Americas. But still, in spite of all these flaws, Cobert's theory is still considered very important, because he gave the concept of geosynclines in the origin of or the formation of mountains, and the concept was carried forward by other theories that came later and validated the concept of geosynclines and the origin of mountains from geosynclines.
Now you'll get questions in exams related to this, like critically explain the Cobert's orogenesis या theory of mountain building of Cobert. So you will explain all the 3 stages with figures, and then you will explain the criticisms, then you will fetch good marks, because and the figures I will show after explaining the Holmes theory. If time is left, I will show how to draw the figures, rough sketches you draw, and you will fetch good marks in exams. Now coming on to the second theory, that is thermal convection theory of Holmes. Holmes gave this theory of convection currents, thermal convection currents, in the year 1928-29 in his book on principles on geology, principles of geology. Now these thermal convection currents were mainly responsible for orogeny, or the formation of mountains. And these thermal convection currents were originated in the substratum. You know, as we go below the crust, temperature increases at the rate of 1 degree centigrade per 32 meters below the crust. So there is rise in temperature when one goes below the crust, and so this rise in temperature becomes so much in the substratum that convection currents are generated. And one more thing related to convection currents, these currents are not generated everywhere below the crust, but only below the continental crust and the equatorial crust, where there is a thick continental crust is thick. So the temperature gradient or the decrease of temperature below the crust is greater, and because of equatorial bulge also, the decrease of temperature below the equator will be greater. So convection currents would be generated below the continental crust or below the equatorial crust, and these will ascend, these will move like this, ascending convection currents, and when they reach the top, that is the crustal part, they won't be able to break open the crust in a single time, but they will follow a cyclic path like this, they will turn like this, and once when their energy will decrease, then these will come downwelling like this. So the convection currents would rise in the substratum, upwelling convection currents, and these will again turn like this, and when they reach the mantle part, upper mantle part, there the density of the upper mantle is very high. At that point of time, it will not be able to penetrate through the mantle, so it will again turn this way. So it will follow like this, ascending, and then it will follow a cyclic path, turn like this, and again ascending. So this is the process, and you see in this figure, you see below the continental block there is ascending convection currents, and these are moving, and once their energy decreases, they are coming down as downwelling convection currents, and when they are upwelling at that portion, like at this point, there will be faulting of the crust, a crack or fault will develop, and then there will be also, if the crack is developed, then it can also give rise to volcano at this point. So these are the tectonically active zones, and when at the portion where the convection cold currents are downwelling at this portion, you see this is a region of compression, and this is where the geosynclines are there, and then due to compression of the forelands, if there is a geosyncline over here, then it will undergo squeezing of all the sediments and formation of fold mountains at this portion. And at this portion, when the crust is breaking and a crack or fault is developed, it can also lead to opening of a new geosyncline. And here where there is already a geosyncline, the compression force will lead to the formation of fold mountains. So this is the basis of Holmes' convection current, where he said that the convection currents are the forces which are responsible for orogenesis, and not the stress or the motive force of as suggested by Covert. Now there are 3 stages of formation
of mountains in case of homes. The first stage is similar to Covert's, which is related to the formation of geosyncline sediments and subsidence. And when the sediments reach greater depths, the temperature increases and they become hot and metamorphose. Their density increases and mountain roots are formed. And this stage is of long duration. Now, the second stage is when the convection currents become more rapid. Descending convection currents applies maximum compression force and the sediments of the geosynclines are folded and mountain building starts in this case. Third stage is the stage of waning convection currents. There is gradual disappearance of the uprising currents and the energy is stored or accumulated below the new thicker crust, which is the mountain roots, and then descending currents also begin to disappear and the eclogite or which has gone to greater depths has a tendency to rise. Thus, there is a volcanic interruption or intrusion in the fold mountains. So, the highest altitude is reached in the third stage as per Holmes. So, these are the three stages of Holmes theory of mountain building. So, when the question comes, you will give all the three stages and give the merits and demerits or the criticisms of the theory. First, we deal with the merits of the Holmes convection current. It is that the view that the convection current was the force related to the orogenesis or the convection current was more scientific compared to the stress force or motive force of Covert. And he gave a scientific explanation to the continental drift theory only and explained the formation of Rockies and Andes mountains. He explained the formation of plateau between two fold mountains. As I have already told you, if the geosynclines are wide, then there is a plateau formed as entire sediments are not folded in the form of fold mountains. Only the marginal areas of geosynclines are folded and there is a plateau or median mass formed in between. And in case of narrow geosynclines, all are folded, all the sediments are folded. He also explained volcanic intrusion in the fold mountains. Now, demerits of Holmes theory is that since the mountains were formed out of sediments, so mountains should have sedimentary rocks, but there was granitic structure also which was folded and Holmes could not explain that why there is granitic structure in the fold mountains. He could not explain the fold mountains of circum-Pacific ring or those along the edges or the eastern and western parts of Pacific Ocean. And no fold mountains were found in the equatorial belt. Although he said that there is in the equatorial belt convection currents are formed, but there is no fold mountain in the equatorial belt which he could not explain. And many scholars also suspected the validity of the convection currents, and mid-oceanic ridge is also not continuous in Pacific. If he explained the Rockies and Andes mountain of Americas, then he should have explained that the mid-oceanic ridge is also in the Pacific Ocean is continuous, but it is not continuous exactly. So, we have dealt with both the theories of mountain building, Holmes and so in this video program we have studied about the definition of mountains, different forms of mountains and different theories related to the origin of mountains or the building of mountains like Holmes convection current theory and Covert's mountain building theory, and we have also dealt with their demerits or criticisms. So, if there is some time left, I can show with the help of a diagram like you have to make simple sketches like this. This is a geosyncline and these are the forelands, A and B part are the forelands, and from here sediments are brought to the geosynclines, and the geosynclines after sedimentation in the geosynclines it undergoes subsidence and a stress force is generated due to which the sediments are folded. Sometimes only if the geosynclines are wide,
The marginal areas are only folded and there is a median mass formed in between. And so in this way you should not be worried. With the help of diagram or simple sketches you can fetch good marks. And in case of Holmes convection current theory also, you can explain that below the continental crust there is upwelling cold convection currents, and here there are various landforms like volcanoes, opening of geosyncline, and then convection currents move this way, and here if a geosyncline is there, both the downwelling convection currents applies pressure and the mountains are formed. In similar way, if the mountains are if the geosyncline is not that wide, then all the sediments are folded, otherwise there is a median mass. So in both way, with the help of simple sketches you can draw. And so friends, keep watching, and next in the next video program we will deal with plate tectonics theory. Thank you. Do you wish to be part of a television studio like this, or any other media system, or already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism New Media Studies. Here in the School of Journalism New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance the media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets the benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOGNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is a bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in the distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media. And we have specialized certificate program in community radio. IGNOU employs various media and communication tools for better teaching and learning process. School of Journalism and New Media Studies utilizes this media system for delivering all our programs. Come and join with us for exploring a new career and enhance your media skills.
Welcome to all. We know that developing a curriculum according to the needs of society, it takes a lot of time. But how can we include community in the development of a curriculum? Today, we are going to discuss about community participation in curriculum development and transaction. We have with us Dr. Neel Kamal Sharan, who is working as assistant professor in School of Education, and myself, Dr. Elizabeth Kuruvilla. So when we think about this community participation, there are two terms coming that where it includes community and participation. And in today's discussion, we are going to cover about that you will be able to define the term community, to identify the various types of communities, and to develop understanding about the resource mapping of the community for the development of curriculum. So when we look at the term community, how we can define the term community? Normally, we will tell that it's a group of people who is sharing a common interest. And when we take some of the famous definition regarding the community, we can state that definition of Cole and Knowles, where he stated that clusters of individual lives make up communities, societies, and cultures. To understand some of the complexities, complications, and confusions within the life of just one member of a community is to gain insights into the collective. So here we can see that it includes different aspects. So instead of getting the importance of one member, we are taking the different aspects of a particular community. Then how this community participation leads to the curriculum development? When we think of that, we can state that curriculum development refers to the process of assessing needs, identifying learning outcomes, planning instructional alternatives, and using the cultural, social, and personal interests that the curriculum is to serve. And we know that when we want to include the community in the process of curriculum development, we can state that the community participation, how it becomes important. That when we think of this community participation, what we can state that it is a kind of process by which people are enabled to become actively and genuinely involved in defining the issues of concern to them, in making decisions about factors that affect their lives, in formulating and implementing policies, in planning, developing and delivering services, and in taking action to achieve change. So this definition was put forward by World Health Organization. Hence, we have seen some of the terms about like community participation, curriculum development. But when we look at the derivation of the term community, in Greek language, community means the fellowship or a group of people who come together for mutual support and to fulfill their basic needs. So every community has got different types of needs, and to fulfilling that needs is very much important. So we can say that there are different definitions of community, and we can say in a nutshell that community is a group of people who have some interest in common. So here, when we look at this community, we can see that there may be two differing views about communities also. The one view stated that a community is natural and key to human welfare, whereas the other view stated that it is non-democratic and it discourages individual growth and freedom. In that way, there may be differing views, but anyway, when you think of community,
in terms of the some phrases like the community participation, capacity, community building. So these all things denotes the positive aspects of community. Okay, so now I have explained about what do we mean by a community. And Dr. Neelkamal, when we think of this community, there occurs that we can see that there are different types of communities. Could you please explain about the different types of communities? Yes. Broadly speaking, there are 4 types of community. First one is geographic community. Second one is communities of interest. Third is communities of identity. And fourth is intentional community. We will discuss one by one. But let me first tell you that these 4 types of community, these are not mutually exclusive. What does it means? It means that when one type of community occurs, it doesn't mean that the another type will not occur. So these can occur simultaneously. Like for example, if a person is a member of geographic community, then at the same time he or she can be a member of communities of identity or communities of interest, or he or she can be a member of intentional community. Okay, now, Dr. Neelkamal, so you have included the diagram of this mutually exclusive and non-exclusive, mutually exclusive. Yes. Okay, you have correctly stated about that. And what about the other types of communities? Okay, so first one is geographic communities. As the name itself suggests, it is based on area. That means the group of people who are living in a particular area, and there is a physical boundaries. It is not necessary that the physical boundary, but certain geographical demarcation must be there in geographic community. Like for example, we start from our house, we stay in our house, and we have neighbors also. Like there are bunches of houses, we are surrounded by bunches of houses, and these houses, they grows and cover entire city, so they become a city. So the members of this particular city or town or village, they are the members of the geographic communities. Like for example, when you travel in a train, like last month when I was traveling from Delhi to Kanpur, I saw that the moment the train starts, after covering 1 kilometer, I reached to one station, that Shivaji Bridge, then Tilak Bridge, and then Anand Vihar. So these, what is this? These stations, or these are the different cities or towns, or we can say village. So the people who are staying in a particular city or town, they are the members of this geographical community. Now there are certain features of this geographical community. Like the first feature is there are common ties among the members based on cultures, shared beliefs and shared attitudes, and social interaction among the members is also there. Members of this geographical community, they interact with each other, they support each other, and there is interdependence among the members also. The members of this community, they depend on each other. Now we have talked about a term called neighborhood. Now let us understand what is this neighborhood. It is the set of people who live in a same geographic area and have similar kind of economic background. Like for example, when you or your parents, when they search for a house, they go and search for a house, and they search the locality, which type of people are staying there, what are their educational backgrounds, because they want to take houses in such a place where they can relate, or the people who are staying there, they are having similar kind of educational background and similar economic background, so they took their houses there. So this is neighborhood. Okay, and Dr. Neelkamal, you have rightly stated that when we go for searching for houses, that we may inquire about the neighbors. So we can see that in newspaper and media how this neighborhood is impacting
a lot in the lives of individuals. Okay. What about the other types of community? Next type of community is communities of interest. Like for example, it is based on our particular interest. Suppose suppose I am a teacher and I am interested in teaching. The moment I saw another teacher, I feel means we have a common identity of teaching someone, so I can relate with another teacher. Similarly, if some person, he or she likes music, then he or she feel or interact with the person who is a musician, or who is interested in music. And like for example, in your life also, the moment you are, suppose you are staying in Delhi, and the moment you go to Russia, suppose you get a chance to go to Russia, Yes. and whenever you meet a person who is from India or who is from Delhi, you feel that, oh, we have got someone. And so this is the community of this is the community of identity. So Okay. we can see that in community, we have seen different types of revolts or strikes or something. There also we can see the community of interest, the solidarity among the members, how they are coming together. So we can see that this community. And another one, there is the community of identity. Could you please explain about communities of identity? Okay, this type of community implies that there are some common identifiable characteristics or attributes, such as common culture, or by culture we mean language, music, religions and custom. So like for example, whenever we meet, suppose I am a person who speaks Tamil, and I met a person who is also a Tamilian, so I can relate with that person. So this is community of interest. Okay. What about the other type of communities? There are one more type of community is intentional community. As the name itself suggests, it is based on certain intentions. Like for example, someone is interested in women right, or someone who wants to do something for women, then he or she can join a community who works for women right. And it is not necessary that the person who is a member of intentional community, he or she is a member of geographical communities. Like for example, I am staying in India, and I wants to do something for women, so I will join I can join a group who works for women right. And if a person who is sitting in America, and he or she also wants to do something for women, then he or she can also join women right group. So it is not necessary that there is geographical boundaries, that the person, they should be remain in the same particular geographical area. So the people from global level as well as local level can join this type of community. So this type of community has got more meaning with the development of ICT. We can see that we can connect with any part, with any group of people, and in any country. So truly you have spoken like that. And next one, I would like to ask you that how to work effectively in a community, how we can work. First of all, we can see that there are in a class also, see the students who are studying in a particular class also, there are so many individual differences. So how can we expect that the members of a particular community, they will be equal, though there are certain common characteristics, but then also certain differences are there. So what we should do is, we should first think in ourselves or among the group, and we should pose certain questions in the group, like what are the reasons for initiating the particular program, and how much funding is there, who is funding, and what is expected of us, what is expected to you, and what is your responsibilities, who are there who will support and who will not support. Like this, we should ask or we should think over certain questions. Another thing is, we should ask certain questions to ourselves also, that
that what do I expect of myself, what are my hopes, and what are my reasons of taking up this job, what are my fears. Like this we have to pose certain questions to ourselves also, and few more factors are there, and with which we can make our community work effectively. Is first one is we should set certain achievable and measurable goals. We can measure the outcomes of the goal, so we should set certain achievable and measurable goals. Second one is we should plan properly. We should not plan like this which which will take a lot of time, or which is there is a lot of possibility of failing of the program. And third one is we should communicate effectively among the members of the group. And fourth one is we should work cooperatively. We should give time. This is important point, that if you want to make our community an effective community, we should give time. Next is sharing of knowledge should be there. We should respect the individuality, that every member is different and they have different skills. We should listen to them, and we should encourage feedback and participation. So we have discussed what are the different types of communities, how to work effectively in a community. And Dr. Neelkamal had stated rightly that what are the things that not only looking at the community, sometimes we have to assess ourselves and we have to find out what are our hopes, what are our fears. So such types of things are important. And next in our discussion, we are going to deal with the community needs assessment and community assets and resources mapping. So this is an important aspect in any community if you want to develop the curriculum. So among these, the first one, that is creating community space. And the second one, understanding diversity. Third one, tracking power structure in a community. Fourth, overcoming internationalized oppression, a barrier to participation. And the last one, participation and dialogue. So dealing with the first aspect, that is creating community space, we can see that the space is needed. For what means that we have the accessibility, the suitability and appropriateness of space. Suppose we want to discuss about the needs of the community, an appropriate space is always necessary. So the community analysis will be of great value, as it will help anybody to identify the spaces that are most inclusive, where most participants can come together without any fear or hesitation like that. And when we think of this space, there occurs one thing, that the issue of safety. When we think of this safety, we have to think of two types of safety is necessary, that is physical safety and psychological safety. So a place where the approachability is very difficult, nobody will come to that particular place. So the physical proximity should be there for assembling together. As far as this physical safety, there is another safety, that is the psychological safety, where the group should be sharing the common ideas, where one can share their ideas freely. So this type of things is important. And in such cases, what is important is that an inclusive community space is very much important. And in the inclusive community space, there occurs two things, that is the beauty and the order. By beauty, it means the physical space is aesthetically pleasing. Otherwise, people will not be attracted to come to that place. And the order, regarding the order, what we can see is that the space is kept in tight and clean. Unhealthy surroundings, people may not be liking to come together. And regarding the second aspect, that is understanding diversity, we know that community members belong to various background, like there may be diversities based on race, caste, religion, language and everything. So in order to
create an inclusive community, we have to understand the background of each community. Could you say something about tracking power structure in a community? In a community, like earlier also I said that in a community there are different types of member. There is a lot of inequality in among the members of the group, and there are three indicators of power. First one is wealth, second one is gender, and third one is the land. caste, that is also an important. Yes. So there are members who have a lot of land is there. Some are more privileged, some are less privileged. So like this, there are certain power structures among the community. So we have to identify the power structure. Now there is one term called oppression. Oppression means the misuse of power. If a member is more privileged, like for example the landlords or the people who have a lot of land in villages, you must have saw in villages some people there are some people who have a lot of land, and what they do, they dominate the poor people who stays in the village. So we have to identify these type of unequal distributions, because in that case oppression may occur, which is the misuse of power. Yes, truly you have stated about the dominant status always occur in a particular community. What about your view about overcoming the international oppression? Okay. Could you say something about that? There is one term called internalized oppression. Let us understand this term with the help of one example. Suppose you are studying in school, and you are studying in class 10 and or in class 8, and suppose you are scared of your math teacher, because whenever you ask questions he started shouting on you, or he beat you. So you develop a fear for mathematics teacher. When he goes and get transferred into another place, and some new teacher comes to your school, new math teacher comes to your school, you develop the same kind of feeling. Even if he or she is a good teacher, you develop fear for mathematics teacher. This is internalized oppression, because when you develop such kind of feeling in yourself. So in psychology we say that it is the psychological effect on the oppressed by the oppressor. Okay, yes. So internalized oppression is that. In the words of Michael Rich, he pointed out that what has to be explained is not the fact the man who is hungry steals, or the fact that who is exploited strikes, but why the majority of those who are hungry don't steal, and why majority of those who are exploited do not strike. Why we accept those things? Why don't we strike? Because we are exploited. So why don't we strike? If we are hungry, why don't we steal? So he said that we should do like this, and why we are not doing this is a matter of thinking. Yes, you have correctly stated. And the last one, that is participation and dialogue. So there occurs some participation and dialogue. When we think of Jack Gibbs, he stated that the participation of the learners group, it is based on three things, that is acceptance, and the next one, that is sharing concerns, setting goals, and organizing action. So this is also important, that we can see that when we look at Paulo Freire, he stated about how the oppressed can come out of that oppressed state. So a dialogue community should be there, and a community should be where all the members should participate in the development of the curriculum. Hope that you might have understood how the community participation is involved in the curriculum development and transaction. Thank you.